Hello everyone. So this time we are heading to Ladakh, but we will not go to the usual standard touristy places. Rather, we will explore eastern Ladakh and we will check out places like Chushul, Rizangla, Changthang Wildlife Sanctuary, Henle, Riu Lake, and so on. So we started our journey today morning from Pathankot and we have crossed Panihal and we will make a night halt at Srinagar today. So let's see. Right now we have crossed the Jawahar Tunnel. We're standing at the Titanic viewpoint. You can see that from this point we can have a glimpse of the valley, the blue sky, white clouds and the green fields. It is a very beautiful view. So this is the view from the Pari Mahal in Srinagar, and this is the Dal Lake. You can see the cloudy sky. And there is a golf course, 18-hole golf course along the Dal Lake. That's why you can imagine the scale of the lake. Can you hear us? Yes, carry on. बोलेंगे क्या? हेलो, बराबर चार्ली करियान. क्या ब्रावो चार्ली करियान. Okay, sir, okay, we have to take a slight left, then the right from 900 meters. Bravo Charlie noted. Over and out. Lot of sheep. I think we need to make some registration over here. हाँ जी जनाब. 100 रुपये. 2 गाड़ियाँ हैं, पीछे और आएगी एक जीप. 2 गाड़ियाँ? कौन सी गाड़ी? जीप आएगी एक हरियाणा नंबर की. जीप नंबर? HR नंबर. उसकी भी काट दो. दे दो 200. जाओ 200 रुपये. जाना कहाँ है? काले रंग की जीप आएगी, ठीक है? हाँ. ब्रावो चार्ली, रोमी कॉलिंग ओवर. ऐसे करता हूँ. ब्रावो चार्ली, रोमी कॉलिंग ओवर. क्यों? पानी पुनी बढ़ के लगता है. करते हैं भाई. जैरो बुरा मन जाती है कि पॉइंट जा आ गया मतलब फोन मेरे काला. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ. हाँ पॉइंट आ गया. ਅਗਰ ਤੇ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ. So this is the Sonmarg Meadows. There are not many tourists over here. It's raining.
drizzling. So many horses, ponies out over here. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੜਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ, ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਰੋਡ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਖੂਬ ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ It's all wet because it has been raining since morning. People are enjoying their pony rides. चीज हिमाचल च नहीं हैगी नहीं है भाई आड़ा पर्टिकुलर फीचर है वेरी वाइड वैली इतनी वाइड तो है ही ग्रासी स्लोप्स एंड वेजिटेशन ट्री लाइन environment of भाई ये जो परा बच्चे अच्छा वही है समान तो भी नहीं जा रहे मोटरसाइकिल होने और गड्डी गुड्डी जा रहा ना सैनिटाइजर है भाई सैनिटाइजर नहीं पे देखिए हैगा कुछ पा दे बेयर च पाने ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਰਫ਼ ਦੇਖੋ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਿਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਜੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜ਼ੋਚਿਲਾ ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗੰਦੀ ਬਰਫ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ So finally we have reached the top of the Zojila. Lots of tourist activity going on over here. Things like that. Forever 2 we are already late, so we will not be stopping over here. We'll rush to Zojila top and we'll try to make to Kargil before 3:30 p.m.
Okay, noted. Over and out. रुकना है? रुकना तो चलो चलो फोटो लेनी है बस उनको फोटो लेनी है फोटो लवांगे इत्थे एक ओके सारा दूजी जिला जिन्हें लिखे लिखे सारे ढके हुए ने बताइए भाई इधर होने ये पीछे स्नो से ना उसका व्यू भाई ये ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ व्यू आएगा देखिए वाला ड्राइव बन गए चलो पीछे रोक लेंगे ना तो लोगों ने ये चीज करनी हाँ वो लोग की बड़े ना आप अच्छा अगर मैं क्या साइड जी देखने कर ड्रोन ऑनलाइन लिया दिया ना जी तुमने बस ले तो नहीं पाने नहीं पानी देखो 313 थोड़ा जीटी रोड दे भी होते बड़े होंगे इत्थे 2 बज गए हनेरे राती 10 बजे पहुंचना तो मतलब नहीं बनता कोई भाई टाइम ज़्यादा वेस्ट किया ना अपना वाई मार रहे कोई अपनों आ रहा और कोई रजिस्ट्रेशन आ करके आओ जरा पूछ के आओ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं So we have entered the Kargil district.
We have just crossed this checkpost where you have to mention all the registration details, including the vehicle details and the all the persons who are traveling. From here on, the road quality is extremely good. It's a very good tarmac road, and it's extremely scenic. The river, I think it's Indus River, it's flowing along the road. We plan to drive all the way to Leh, but I think we are going to be extremely late, so I think we'll travel till 5 p.m. and we will find a hotel, guest house, or a good tent camping site where we can pitch our tents. So let's see what is in store. So now we have entered into this town of Dras. From here it would take another an hour and a quarter to reach Kargil, and it would take us around 6 hours to reach Leh. So right now we are standing in the Kargil War Memorial in the memory of the martyrs who laid their life for the security of this nation. मैं राजन का मैं लैटर लूटा भी लाया मत्थे ते लाने वालियां मेरे को भी हैगी. ते मैं करूं जो Right now we are standing on the banks of river Wakha. Molbek is situated on the banks of river Wakha, which is itself a tributary of some other river by the name Shigar.